Welcome to your biology class. Hope you all are well. So let's start with the daily review. So first is the NCERT question on page 125. Why is the use of iodized salt advisable? So the use of iodized salt is advisable because the thyroid gland requires iodine in order to produce thyroxine hormone. The deficiency of thyroxine due to less iodine in the diet can impact the metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. It can also cause a disease called goiter in which the neck swells up due to the enlargement of the thyroid gland. तो हमें आयोडाइज सोल्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज जो आयोडाइज सोल्ट है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि आगे जाके हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. और अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट की कमी हो जाए तो इट कैन लेड टू अ गोइटर, जो एक स्वेल, हमारा नेक जो है वो स्वेल अप होने लग जाता है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, जिससे कि जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है. सो नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.4 ऑन सप्लीमेंट्री बुक page number 9. Name the pubertal hormones that cause changes in boys and girls around the age of 10 to 12 years and the endocrine glands responsible for them. So the pubertal hormone responsible for the changes in boys around the age of 10 to 12 years is the testosterone. The endocrine glands that produce the hormone are the testes, while in the pubertal hormone responsible for the changes in girls around the age of 10 to 12 years is estrogen. The endocrine gland that produce the hormones are the ovaries. So in our body, both dash and dash are the hormone released are regulated by the feedback mechanism. So both the timing and amount of hormone released are regulated by the feedback mechanisms. Okay, so let's start with the next topic. So students, plants also need to control and coordinate various activities. So what kind of activities could these be? So is control and coordination in plants similar to that in animals? So let's find out with this slide. So coordination in plants. So identify the movement shown by the plants. So first is the Venus flytrap closing when an insect enters. तो एक Venus flytrap होता है जिसमें कि जब कोई भी इंसेक्ट उसमें एंटर करता है तो वो क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट इज द शूट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट. ये मूवमेंट शो कर रहे हैं, राइट. तो जब हम टच मी नोट को, एक सेंसिटिव प्लांट होता है जो टच मी नोट, उसको हम टच करते हैं तो वो अपने लीव्स जो है वो क्लोज कर लेता है. एंड रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द वाटर. दीज आर ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट. सो प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट इज द नेस्टिक मूवमेंट एंड सेकेंड इज द ट्रॉपिक मूवमेंट. सो इन द नेस्टिक मूवमेंट they are non-directional movements in which plants show an immediate response to the stimulus in a direction that is independent of the direction of the stimulus. तो जो नेस्टिक मूवमेंट होती है वो एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसमें कि जो प्लांट है वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलस से. जैसे कि ये पिक्चर प्लांट होता है, हो गया, या फिर वीनस फ्लाईट्रैप हो गया. तो वो क्या करता है, जब भी इंसेक्ट उसमें एंटर करता है तो वो एक स्टिमुलस कोज करता है जब कोई भी इंसेक्ट एंटर करेगा, तो जिससे कि वो प्लांट जो है वो क्लोज हो जाता है, लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं. सो सिंस द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ, नेस्टिक मूवमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स. तो ये जो नेस्टिक मूवमेंट होती हैं ये ग्रोथ नहीं कोज करती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं. सो नेस्टिक मूवमेंट्स आर क्विक रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस. तो ये स्टिमुलस को एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं. सो फिल द सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल गिवन इन प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.2. सो द टाइप ऑफ मूवमेंट इन नेस्टिक मूवमेंट, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जो कि ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं करती है, और इनकी जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है स्टिमुलस डायरेक्शन से. रिस्पॉन्स का टाइम जो होता है वो इमीडिएट होता है. और एग्जांपल क्या है कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द
stimulus of touch. Next is the tropic movement. In tropic movement, they are directional movement in which plants either move away from the stimulus और टूवर्ड्स द स्टिमुलस. तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसमें कि जो प्लांट है या तो स्टिमुलस की तरफ को मूव करेंगे या फिर स्टिमुलस के अवे मूव करेंगे. Since the movement of the plant involve growth, tropic movements are also often called growth dependent movements. So the tropic movements are much slower than the nastic movement. जो tropic movement होती है वो nastic movement से बहुत slow होती हैं. बिकॉज क्यों होती है? बिकॉज जो रूट को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट. और जो नेस्टिक मूवमेंट होती है वो तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स कोज करते हैं. सो द ट्रॉपिक मूवमेंट्स दे हैव द टाइप. व्हाट आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स? सो डायरेक्शनल मूवमेंट्स दैट इन्वॉल्व द प्लांट ग्रोथ. डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, डायरेक्शन कैसी होती है? सो दे मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. रिस्पॉन्स का टाइम इनका बहुत स्लो होता है. एंड एग्जाम्पल क्या है कि ग्रोथ ऑफ शूट टूवर्ड द स्टिमुलस ऑफ द लाइट. सो नेक्स्ट इज द व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग शो. तो जब हम लीव को टच करते हैं और जो रूट ग्रो होती है तो ये दोनों कौन सी मूवमेंट शो कर रहे हैं? सो फर्स्ट वन शोज द नेस्टिक मूवमेंट एंड द सेकेंड वन शोज द ट्रॉपिक मूवमेंट. सो व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट इन प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स. तो अब प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट क्या हुआ एनिमल से? सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. In plants, they do not have a nervous system and respond only through electrical, chemical signals and plant hormones. And plants respond to a stimulus only by moving a certain part and not their entire body like animals. So plant में जैसे कि nervous system present होता है, एनिमल में जैसे कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है तो प्लांट में जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ही रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके. और जो प्लांट्स हैं वो स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करते हैं बाय मूविंग कुछ मूवमेंट के. पर जैसे कि एनिमल जो है पूरा मूव करता है तो प्लांट जो है वो पूरे मूव नहीं करते हैं. सो द समरी इज दैट द नेस्टिक मूवमेंट दे आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच इन्वॉल्व द प्लांट ग्रोथ, which do not involve the plant growth, and the direction of movement is independent of the stimulus direction and response shown by the plant is immediate. While in tropic movement they are the directional movements that involve plant growths and the direction of movement is either toward or away from the stimulus and plants show a slow response. Okay students, so let us now understand how nestic movements occur and how they are different from movements in animals. So let's watch a video. Nastic movements. Let us take the example of the touch-me-not plant or the sensitive plant. When the leaves of this plant are touched, they begin to fold up and droop. This movement is an example of a nastic movement. Why is this movement a non-directional movement? Let us slow down this video and compare the direction of the stimulus and the response. In which direction was the leaf touched? Yes, in this direction. But in which direction did the response of folding of leaves occur? Yes, in this direction. As we can clearly see, the direction of response of the folding of leaves is different or independent of the direction of the stimulus, that is touch. So we can conclude that this is a non-directional movement. We can also see that this movement does not involve the growth of any part of the plant and the response by the plant is given immediately. Hence, this is a nastic movement. Why do the leaves of the touch-me-not plant droop when touched? When the leaves are touched, in response to touch, electrical chemical signals reach the cells at the base of the leaves. Here, they result in some changes.
What changes do you see in the cells at the base of the leaves once the electrical chemical signals reach the cells here? We can see that some of the lower cells of the leaf lose water and shrink. However, the cells above do not experience water loss. What could these changes result in? Because the upper cells are heavier, they will exert pressure on the lower cells. As a result, the leaves of the touch-me-not plant will fold inwards. Also, do these leaves remain folded forever? No. After some time, the cells at the base of the leaves regain water and the leaves reopen. So today, we learned that plants show nastic movements by changing the amount of water in them. These movements do not involve growth but result in swelling or shrinking of plant cells, which result in a change in shape. But how are the nastic movements different from the growth-independent movements shown by animals? Unlike animals, plants do not have specialized nervous tissues to conduct electrical chemical signals. Also, plants do not have special muscle proteins to change their shape or arrangement. To summarize, we learned how plants show nastic movements by changing the amount of water in them. To study this, we took the example of the touch-me-not plant. When the leaves of this plant are touched, electrical chemical signals reach the cells at the base of the leaves. The cells lose water and shrink. Because the cells above them are heavier, they exert pressure on the lower cells. As a result, the leaves fold inwards and show nastic movements. Okay students, so what changes occur in the part of the plant showing nastic movements? तो nastic movement जो होता है तो तब क्या changes occur होते हैं? So the changes in the water content of the cell occur in the part of the plant showing nastic movement. तो वो जो water content होता है वो change हो जाता है cell का, जिससे कि nastic movement जो है वो cause होती हैं. So like animals, do plants also have a muscle protein and special tissues to show nastic movement? तो जैसे कि animals के पास specialized muscle proteins और special tissues होते हैं, तो nastic movement show करने के लिए भी plants के पास वो होते हैं. So no, plants do not have any muscle proteins or special tissues to show nastic movements. Okay. So next is the NCERT exercise on page 126, 12th question. What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? So movement in sensitive plants and movement in human leg का हमने एक difference बताना है. So movement is a result of a response to an external stimulus like touch, which leads to the folding or dropping of leaves. While in movement in human leg, the movement occurs due to the will of the person, which results in the person going from one place to the another. So जब movement जो होती है sensitive plants में, तो वो जब हम उनको टच करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स में वो स्टिमुलस कोज होता है. बट इन ह्यूमन लेग हम खुद की विल से चाहते हैं कि हमारी लेग जो मूव हो, तो जिससे कि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं. सो जो ये मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स एंड अदर वन इज़ द एग्जांपल ऑफ अ वॉलंटरी मूवमेंट इन ह्यूमंस. सो द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट इज़ नॉट पास थ्रू स्पेशल टिश्यू इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेशल टिश्यू के थ्रू नहीं पास की जाती, बट ह्यूमन में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू पास की जाती है. So in sensitive plant, change in the shape of leaves is caused due to the change in the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of cell, while in human leg, the change in the shape and arrangement of muscle protein results in the contraction and relaxation of the muscles, leading to a movement in legs. So these are the difference between the movement in sensitive plant and movement in human legs, which you have to write in your notebook. Okay. So and if you have any doubt, you can ask me anytime. Bye bye.